10th Maths, Chapter 8, Introduction to Trigonometry, and we are into the 14th session. Since previous 3 sessions, we are solving prove that type of sums, and we are also making the list of the process in each recipe or in each dish. I mean, in each prove that type of sums we use, we are noting it down, correct? Alright, we will come across some new today. Okay. So, we have solved 26 sums so far. So, we move on to the next, and that is 27th one. Let us observe what is left inside. Bracket into bracket is equal to 2. First bracket has a trinomial. Second bracket has a trinomial. So far, all the sums that we did not have this type. We had binomial into binomial or binomial into trinomial, but trinomial into trinomial wasn't there. Okay, so that is one difference that you observe here. Okay, that is one difference that we see here, we observed here. Okay, the next thing, see the trigonometric ratios. Cot, cosec, tan and sec. 4. The two fundamentals, they are missing, sine and cos. Anyway, what we have to prove on right hand side is 2, which is as clear as water. Very simple, isn't it? Okay, now, so what to do? The first thing that will come into our mind is transforming these 4 trigonometric ratios into sine and cos. But still, the trinomial and trinomial will remain. So that expansion will have to be done. So, in the first step, I do not convert into sine and cos. Then we will see. Okay, left hand side. 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta. Alright? Chaliye, children, what is the first term here? It is 1 into that second binomial. 1 plus tan theta plus sec theta. Okay? What is second term? Plus, with sign, plus cot theta into the second polynomial. 3 terms wala. 1 plus tan theta plus sec theta. Alright? And what is the third term? With sign, minus cosec theta into the trinomial, that is polynomial having 3 terms, 1 plus tan theta plus sec theta. Isn't it? Now, 1 into 1 is 1. 1 into tan is tan. 1 into sec is sec. Cot into 1 is 1. Cot into tan is tan. Cot into sec is cot into sec. Cosec into 1 is cosec. Cosec into tan is cosec into tan. Alright? But I'm not going to do this in this way. I just showed you how exactly it happens. Alright? So what I am going to do here? Directly, you know children, but very be careful. Chaliye. 1 into 1, 1 and same sign plus 1. 1 into tan, that is tan theta, same sign plus. Then 1 into sec, that is sec theta, same sign plus. Now, cot into 1, that is cot theta, same sign plus. Now, cot into tan theta, cot theta into tan theta, and same sign so plus. Then cot theta into sec theta, cot theta into sec theta, and same sign so plus. Correct? And now we move on to the last one, that is cosec into 1, cosec theta minus plus, different sign so minus. Cosec into tan, so that is cosec theta into tan theta, different sign plus and minus, so minus. Cosec into sec, cosec theta into sec theta, again different sign, so minus. Children, एक चीज मुझे मिली, that is cot into tan, that is 1. Cot theta into tan theta is 1. सिर्फ इतना फायदा हुआ. Alright? But now I'll have to convert everything into sine and cos. That is 1 upon 1 plus sine upon cos. I'm using short forms, not you. Because everything will be in terms of sine and cos. That's why. Plus 1 upon cos plus
cos upon sine plus, you may write 1. You may write 1, and even if you don't write, cos upon sine into sine upon cos. Here multiplication is, so cancel, that will be 1. Is that okay? So I'll be writing 1 plus cot, cos upon sine, sec, 1 upon cos, minus cosec, that is 1 upon sine, minus cosec, that is 1 upon sine, into tan, that is cos upon sine. Alright, I'll write here minus cosec, 1 upon sine, and minus sec, 1 upon cos. Alright, अब क्या कर सकते हैं, 1 plus 1, इसको 1 ही रहने दो, है ना, 1 plus 1, that is equal to 2. Very interesting, ये आ गया 2. You must keep that right hand side in mind. Alright, लेकिन ये सब सारे का क्या करेंगे अब, that should be equal to 0. वो सब कैंसिल हो जाना चाहिए. So sin upon cos plus 1 upon cos plus cos upon sine plus ये कैंसिल हुआ, so 1 upon sine, फिर माइनस 1 upon sine, करेक्ट, यहां कुछ भी नहीं कैंसिल हुआ, माइनस cos upon sine square और माइनस 1 upon cos into sine. Okay, again this cancelled, correct? I hope you are not making any mistake. चलिए आगे बढ़ते हैं. This I am going to retain very nicely. इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखने वाला हूं. All right, I can go for LCM of the rest of the terms. Here we have cos. I don't know, here somewhere sine square आया ना? This second last term. Cosec is 1. Yes, I made mistake here. I told you somewhere I am making mistake. 10 is sine upon cos. So this cancels. So this term is 1 upon cos. Is that fine now? Okay? Yeah. If you were in the classroom, some children would have shouted, "Sir, here 10. That is sine upon cos." Yes, it would have been great help to me. Anyway, we got it? Right. So LCM, cos मिलेगा और sin मिलेगा. That's it. Here sine, here sine, here cos. ये तो गया term. Here sine, and this is 1 because both cos and sine are present. Okay. Sine into sine, sine square. 1 into sine, sine. Cos into cos, cos square. Then, okay, it's minus now. Minus, oh children, even 1 upon cos or minus 1 upon cos could have been cancelled, right? चलिए ठीक है, अभी cancel होगा. See now, this is minus sine and minus 1. Alright? Now you see, plus sine minus sine cancels. That is 2. Sine square plus cos square is 1. Minus 1 upon cos into sine. Because cos square alpha plus sine square alpha is equal to 1. So that is 2 plus 0 upon cos into sine. That is 2 plus 0 and that is 2. That is RHS and proved. I hope you have understood. I could have cancelled this children here. 1 upon cos minus 1 upon cos. तो यहाँ एक दो टर्म कम होती. Anyway, you can do when you are doing it. Fine? Alright. So I hope you understood the 27th one. Okay, fine. Now, we are going to see different type. That is difficult, but if you understand, it's easy and it is totally different. If you remember, in 6th chapter, we saw properties of equal ratios and laws of proportion. Property of, I'll discuss that. Okay, fine? Yes, and what is the property of equal ratio? Property of equal ratios. Property of equal ratios. What is that property, children? If A upon B is equal to C upon D, then each ratio is equal to, you can say A plus C whole upon B plus D, or that is equal to, you can say A minus C upon B plus D, or that is equal to, multiply and divide by M and then say that is MA plus C upon MB plus D, and that is equal to, you can get infinite equal ratios. Do you remember?
All right. And then laws of proportion. Laws of proportion. All right. First, alternando. Alternando. Second, invertendo. Invertendo. Third, componendo. Componendo. Fourth, dividendo. Correct? याद आया? And fifth, componendo, componendo and dividendo. Componendo and dividendo. Briefly I'll express. If A upon B is equal to C upon D, आप क्या कर रहे हो? Alter कर रहे हैं position of B and C. Then A upon C is equal to B upon D. This is alternando. Invertendo. If A upon B is equal to C upon D, then if you are taking inverse of A upon B, which is B upon A, then it is equal to inverse of right hand side also, D upon C. That is invertendo. Componendo. If A upon B is equal to C upon D, then A plus B, A is the numerator plus denominator upon denominator. डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है. दैट इज इक्वल टू सी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डी अपॉन डी. दैट इज componendo. Then dividendo. If A upon B is equal to C upon D, then A minus B whole upon B is equal to C minus D whole upon D. C minus D whole upon D. This is dividendo. And finally, componendo and dividendo. If this is given A upon B equal to C upon D, then A plus B, पहले componendo, so add, upon dividendo, so A minus B, not B minus A minus B, is equal to C plus D, numerator plus denominator, upon numerator minus denominator. आपको माइनस पहले चाहिए तो यू कैन यूज डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो. ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, उसका इन्वर्स कर देंगे तो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो. इज दैट क्लियर टू यू? ऑलराइट. ऊपर प्लस है तो पहले कॉम्पोनेंडो और नीचे माइनस है तो डिविडेंडो. सिर्फ कॉम्पोनेंडो में प्लस आता है, सिर्फ डिविडेंडो में माइनस आता है. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में पहले प्लस फिर माइनस. यदि उल्टा कर दो डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो तो पहले माइनस फिर प्लस. Is that clear? इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं and I'm going to show you this by two methods. All right? Okay. Fine. Both the methods are a little bit tough, but then I'll give you a trick. Okay? Let's see what is left hand side. Cos sine, cos minus sine plus 1 whole upon cos A plus sine A minus 1, that is equal to cosec plus cot. इसका तो हम सोच सकते हैं. दो चीज पॉसिबल है. यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इनटू साइन एंड कॉस. एक दो स्टेप देख सकते हैं, वही लाना है. लेकिन इसको कन्वर्ट मत करो. क्यों? बिकॉज यू हैव टू डू दिस बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 plus cot square is equal to cosec square. ये आइडेंटिटी यूज करके इसको लाना है. सो this left hand side which I am picking up, children, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1. Children, इसका जरा सोचते हैं. sin cos में क्या होगा? 1 upon sin A plus cos A upon sin A. आप जरा डिनोमिनेटर में देखिए, क्या है डिनोमिनेटर में? साइन. और कॉमन है, सेम है. सो यहां का स्टेप देखिए. नाउ यू सी दिस स्टेप. आई एम नॉट पुटिंग इक्वल टू, आई एम राइटिंग कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1. दिस आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय दिस साइन ए. देन आई एम राइटिंग बिग लाइन एंड देन आई एम पुटिंग इक्वल टू. फिर ये न्यूमरेटर कॉस ए plus sin A minus 1, and that denominator also I am dividing by the same trigonometric ratio sin A. Did you understand?
divide, actually multiplying numerator by 1 upon sin A and denominator. So actually sin A will cancel. So same rational expression will remain. Is that clear? Okay. Now, splitting the term, cos A upon sin A. Cos A, alright, upon sin A minus sin A upon sin A plus 1 upon sin A. And that big and now line and then equal to cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A. This is cot A minus this cancel. So 1 plus 1 upon sin is cosec A upon cos upon sin is cot A plus ये cancel हुआ plus 1 और 1 upon sin is cosec A. Yes, सब sec और cot में convert हो गया. Sin and cos are converted into cot and sec. But यहाँ तो just cosec A plus cot A चाहिए. चलिए, that is what I write here. That is equal to, what is the first term? Cot A. फिर I write cosec A with its sign plus, और ये constant term minus 1 I am writing last. Same thing I am doing here. Cot A first. Yeah, cosec with minus sign. So minus cosec A and plus 1. Children, अब आपको ये identity use करनी है. And what is 1? Tell me what is 1? Cosec square minus cot square. वो लिखना है. अब यहां तो 1 दो जगह पे है. 1 दो जगह पे है. रेड 1 है और ग्रीन 1 है. किस 1 के लिए हम लिखे? क्या दोनों 1 के लिए लिखे? नहीं. आपको जो भी प्रूव करना है राइट हैंड साइड, यू कैन से होल अपॉन 1. जो है, जो बाइनोमियल है वो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर वाला 1 के लिए सब्स्टिट्यूट करो. यदि ये 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट 1 अपॉन समथिंग होता तो वो बाइनोमियल डिनोमिनेटर में होता, तो आप डिनोमिनेटर वाला 1 के लिए सब्स्टिट्यूशन करते. चलिए नेक्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज हमें ध्यान रखनी है. इसको मैं ग्रुप करने वाला हूं. यस, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ग्रुप में डाल दिया, और ये 1 के लिए सब्स्टिट्यूशन. वो 1 क्या है बोलिए? 1 will be cosec square minus cot square. So cosec square A minus cot square A. Group कर दिया children. They are in the group. And now this as it is, cot A minus cosec A plus 1. Children, this is A square minus B square. So A plus B and A minus B are its factors. X square minus Y square. So X plus Y and X minus Y are the factors. So I'll write two factors and be careful about this minus sign. So this is cot A plus cosec A as it is minus. बोलिए, cosec A minus cot A into cosec A plus cot A whole upon जो भी है डिनोमिनेटर में cot A minus cosec A plus 1. चिल्ड्रन, ये cot A plus cosec A or cosec A plus cot A, it's one and the same. So take that common. Cot A plus cosec A is common. ये कॉमन निकल गया. ना दूसरी ब्रैकेट में ये कॉमन में गया, सो 1 माइनस, ये ब्रैकेट बच गया तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा cosec A माइनस cot A होल अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1. एक स्टेप की वजह से मुझे यहां लिखना पड़ेगा. ऑलराइट children, that is equal to cot A plus cosec A. Children, that is your right hand side. तो ये रेड वाला पार्ट कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखता है, but it is same. लिख दो, open the bracket. 1 minus bracket open, so minus signs will change, और minus cot A becomes plus cot A. Children, ये 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर सेम है. देखो थोड़ा रीअरेंजमेंट करता हूं टर्म्स का. यहां +1 है, सो आई एम राइटिंग दिस +1 फास्ट.
then minus cosec hai, then I am writing this minus cosec a next, correct, and then plus cot a hai, so I am writing plus cot a. Dekha, same. So that is equal to cot a plus cosec a, and that is equal to RHS. Proved. Clear, children? So wasn't easy that substitution of 1 where you are using this identity 1 plus cot square equal to cosec square, but we have great substitution for 1 cosec square minus cot square. All right, okay children, now we'll see how we can use property of equal ratios and laws of proportion to get this. कैसे इस्तेमाल करते हैं देखते हैं. We will be using this identity, okay? Alternative method. Alternative method. All right? ये अपॉन 1 तो हमने लिखा है, ऐसे ही है, लिख सकते हैं. चलिए, we start straight away with identity, children. जरा देखना. We know that. We know that. क्या है? 1 plus cot square a. I'll use this board nicely so that we don't need extra space. We know that. We know that 1 plus cot square a is equal to cosec square a. Children, cosec minus cot, cosec plus cot, वो चाहिए ना मुझे. Cosec plus cot is one of the factor of cosec square minus cot square. So I am taking this cot square on other side. Therefore, 1 is equal to cosec square a minus cot square a. Therefore, see what I am doing here. 1, I am writing 1 into 1. Can we write that? Okay. Even if you don't write, don't worry. That is equal to इसके दो factors. Cosec a minus cot a. और दूसरा cosec a plus cot a. Come on children. This is what you want. ये यहाँ है. तो इसको ये बाजू ले चलो. So 1 upon cosec a minus cot a is equal to cosec a plus cot a whole upon ये 1 एक 1 वहां ले जाओ. सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो या कॉम्पोनेंडो ऑफ डिविडेंडो देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. ऑलराइट, नाउ दिस इज व्हाट of property of equal ratios. Let's call this result 1. Alright, अब आप देखो चिल्ड्रन, यहां दोनों के प्लस साइन है ना. बोथ आर हैविंग प्लस साइन, है कि नहीं? यहां कॉस और साइन के प्लस साइन है, करेक्ट. दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट चिल्ड्रन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. और ये दोनों कॉसेक और कॉट पॉजिटिव है, यहां कॉस और साइन पॉजिटिव है, सेम साइन. ओके, आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? और इसलिए उसके साथ जो है वो है -1. सो सी ईच, देयरफॉर ईच रेशियो इज इक्वल टू दिस टू -1 cosec a plus cot a -1. This minus this, numerator minus numerator, ulta. So this will be 1 minus ये. Can I write directly without putting the bracket? ये minus की वजह से bracket चाहिए, लेकिन I will change the sign carefully. Minus cosec a और ये बन गया plus cot a. Is that clear? Now you transform everything into sin and cos and see if you are getting this. This is equal to 1 upon sin plus cos upon sin minus 1 upon 1 bracket में whole upon, so divide by 1 upon 1 minus 1 upon sin plus cos upon sin. So this gives me 1. Okay, LCM sin और 1, that is sin. So यहाँ 1 यहाँ sin. So 1 into 1 1 plus 1 into cos minus 1 into sin minus sin. All right,
आई मल्टीप्लाई ऑल्सो, सॉरी एक बार को डिवीजन करेंगे, बहुत डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहां भी एलसीएम 1 साइन और साइन का साइन, या साइन 1 1 1 इंटू साइन साइन, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और कॉस इंटू साइन कॉस, दैट इज इक्वल टू, ओके चिल्ड्रन आई एम राइटिंग दिस कॉस माइनस साइन प्लस 1 ऑर्डर में अपॉन साइन इनटू साइन ऊपर कॉस प्लस साइन माइनस 1, साइन साइन कैंसल, सो आई एम राइटिंग दिस cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1, आया ना वो cos A plus sin A, this is result 2। चिल्ड्रन रिजल्ट 1 क्या बताता है, ये दो रेशियो इक्वल है। रिजल्ट 2 क्या बताता है, ये दोनों रेशियो इक्वल टू थर्ड रेशियो दिस। मुझे ये रेड वाला चाहिए और ये ब्लैक वाला चाहिए, सो आई जस्ट राइट बाय 1 and 2 it follows that एक चीज हम भूल गए, हमने यहां क्या यूज किया, ये कैसे मिला आपको, कहां यूज किया, ये राइट। इसके बाद ईच रेशियो इज इक्वल टू, यहां लिखना पड़ेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज, ओके। नाउ यू कैन से बाय 1 and 2 it follows that, कौन सा लो, ये that is cos A minus sin A plus 1 whole upon cos A plus sin A minus 1 is equal to, ये लेता हूं cosec A plus cot A। प्रूव्ड। चिल्ड्रन इस मेथड में मैंने आइडेंटिटी पिकअप की और ये पूरा रिजल्ट लाके रख दिया, प्रूव्ड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड डायरेक्टली आ रहा है, सो दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ मेथड। आप कुछ ले रहे हो और ये पूरा इक्वल रेशियोज डिराइव कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज वन मेथड। अनदर सम ऑफ सिमिलर टाइप, and by both methods I'm going, first method you do, I'll just show you, fine, let's see. All right then, let's see the next one, 29, similar to what we did in 28, but it is slightly different, right hand side is different। 1 upon sec minus 10, आप देखो इस बार वो बाइनोमियल डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर का 1 के लिए सब्स्टिट्यूशन जाएगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? ये 1 is equal to sec square minus 10 square, लेकिन I'll pick up the left hand side first, left hand side sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1, alright। इस बार sin cos को sec 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो आप जरा देखिए, sec is 1 upon cos theta minus 10 is sin theta upon cos theta, डिनोमिनेटर में क्या है? cos, so you are going to divide the trinomial in numerator by cos theta, trinomial in denominator also by cos theta. So I'm not putting equal to sin theta minus cos theta plus 1 whole upon sin theta plus cos theta minus 1 whole upon, और ये बीच वाली लाइन this equal to, I'm dividing this by what? cos theta, and this one also by cos theta. While splitting, now I am going to write directly, children. Sin theta upon cos theta, tan theta minus cos theta upon cos theta 1 plus 1 upon cos theta sec theta whole upon sin theta upon cos theta tan theta minus, in fact plus cos upon cos 1, all right, minus 1 upon cos sec। तो उतना तो हो गया, sec और tan में कन्वर्ट हो गया, बट देखो थोड़ा ऑर्डर में अब लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को लास्ट, पहले 10 है, ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। चिल्ड्रन जो बाइनोमियल है डिनोमिनेटर में है, सो हम ये प्लस 1 के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ग्रुपिंग करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, एम आई राइट? ओके, सो दैट इज इक्वल टू tan theta minus, in fact plus sec theta minus 1 whole upon, इसको ग्रुप में tan theta minus sec theta, tan theta minus sec theta plus that 1
What is 1? Sec square minus tan square. Sec square theta minus tan square theta. Some children write the factors directly. Sec minus tan into sec plus tan. Fine. So this is tan theta plus sec theta minus 1 whole upon tan theta minus sec theta. ये ग्रुप कर दिया है, राइट? प्लस यहां फर्स्ट फैक्टर sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरा फैक्टर sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, आपको दिखता है sec. ओ चिल्ड्रन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है. यहां tan माइनस sec है, यहां sec माइनस tan है. यस, 4 बार 4 टाइम्स वी हैव बीन इनटू दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. और हमने क्या किया था, इसको sec माइनस tan से tan माइनस sec करना है तो माइनस कॉमन कर निकाल दो, -1 कॉमन. सो ये प्लस हो जाएगा -1. सो नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दैट इज इक्वल टू ऊपर से tan थीटा प्लस sec थीटा -1 होल अपॉन. वेल यहां से निकालना हो तो वो भी कर सकते हैं चिल्ड्रन. वुड यू लाइक टू डू दैट? ओके, माइनस. चलिए यहां कर दिया sec थीटा माइनस tan थीटा, वो माइनस कॉमन है, प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा. ठीक है, अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन, करेक्ट? ऊपर सेम रहेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इज कॉमन. बी केयरफुल अबाउट द साइन. यहां कॉमन में गया लेकिन माइनस है, सो -1. फिर ये कॉमन में गया और ये प्लस साइन है, सो नो चेंज इन साइन. sec थीटा प्लस tan थीटा. आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, इसको आप ब्रैकेट कर दो चिल्ड्रन, सेम ही तो है. देखो tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और -1 कैंसिल करो. नो नीड ऑफ रीअरेंजिंग द टर्म. आपकी समझ में आ गया. एंड दैट इज इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं रहा, नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा, and that is equal to RHS proved. So I hope now it is better, you have understood better, because this is the second one. Even the second method, okay, we start with identity और suddenly ये पूरा पिक्चर लेके आते हैं. ये जो पूरा पिक्चर है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पूरा हम लेकर आते हैं. We start with identity by saying we know that. देख लेते हैं वो भी मेथड. So ready? All right. We know that. कौन सी आइडेंटिटी? sec और tan वाली. वो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. But you need 1 only. So sec square minus tan square. 1 is equal to sec square theta minus tan square theta. So here you may write 1 into 1, that is sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta. ये sec theta minus tan theta नीचे चाहिए, so इसको नीचे ले जाएंगे. So 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta whole upon 1. वो वही रहा, upon 1. This is result 1. Excuse me. अब देखना है, ये sec और tan पॉजिटिव है, वहां sin और cos पॉजिटिव है और उसे चाहिए -1. सो दिस न्यूमरेटर -1, इसको माइनस करो. सो देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियोज in 1 we get each ratio is equal to, ये न्यूमरेटर sec थीटा प्लस tan थीटा और ये -1. वैसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे, यहां डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 टर्म है चिल्ड्रन, सो आई हैव टू पुट द ब्रैकेट, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. सो आई एम वेरी केयरफुली चेंजिंग द साइन. प्लस sec थीटा है वो माइनस sec थीटा और माइनस tan थीटा है वो प्लस tan थीटा. आप थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, i.e. ओके दैट इज इक्वल टू किस हिसाब से, वेल एक्चुअली आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस, है ना, क्योंकि ये चाहिए, ये तो है, ये हमें मिल गया है यहां फर्स्ट रिजल्ट में. नाउ दिस टू रेशियोज इक्वल टू दिस,
लेकिन ये sec और tan में नहीं चाहिए, sin और cos में चाहिए. All right, I'll do that here. That is equal to sec 1 upon cos plus, so plus tan sin upon cos minus 1 upon 1 divided by 1. You may say 1 upon 1 minus sec, that is 1 upon cos, then plus tan, that is sin upon cos. So like denominator, yeah, but this one is not there. So 1, 1 and cos. So 1 ones are 1 plus 1 signs are sin minus cos. Divide by, here the LCM is cos, cos 1, 1. So that is cos minus 1 plus sin. So now convert division into multiplication. आप थोड़ा सा rearrange भी कर सकते हैं. Sin minus cos plus 1 upon cos into cos ऊपर sin plus cos minus 1. ये cancel. So this is sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1. This is result 2. मिल गया कि नहीं? And now you can say by 1 and 2, it follows that this equal to this. Proved. Alright? Clear to you? I hope you have understood. Alright children, so we move on to the next one, and it is 30th one. Now, again it is prove that type of sums only, but slightly different. While proving, you pick up left hand side and show that is right hand side, or you pick up right hand side and show that is left hand side, or you pick up left hand side, simplify, right hand side, simplify. The two results are equal. Alright? And one more method we saw. In those two, we pick up the identity and then prove directly left hand side is equal to right hand side. Well, and in all this, we use trigonometric identities, we use simplification in which we take LCM, factorization, expansion, okay, substitution, trigonometric interrelationship, all these things we use, okay. In this prove that type of sum also we are going to do the same, but we have one extra condition, okay. Let's see, if sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta, if this is there, then prove that left hand side is equal to right hand side. So left hand side equal to right hand side तो prove करना ही है, और उसके लिए हमारे पास जो वो हमने लिस्ट बनाया वो तो है, the procedure, list of procedure, but here we have got this extra. So I'll start with that first, okay, or should I start with this and prove that result? Yes, I'll have to do that. Okay, sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta. This is given. This is given, okay. I'll call it result 1, and after writing common, I'm writing given. Alright? Okay. Now what to do? Children, what to do? क्या कर सकते हैं? Cos theta साथ में ले सकते हैं. Those terms are like, but one is on right hand side, the other is on left hand side. So we'll transfer this term on right hand side. So only sin theta, this will be left on left hand side, is equal to root 2 cos theta, correct? And then minus cos theta. What can be done? Well, therefore, sin theta is equal to, you can take cos theta common, and that is root 2 minus 1. Cos theta is common, root 2 minus 1. What next? क्या करें आप? See this, you have learned in 9th standard to rationalize. So I'll excuse me. Generally we rationalize the denominator, but here we are going to rationalize the numerator. So multiply and divide by. What is the rationalizing factor of root 2 minus 1? Yes, root 2 plus 1. So I multiply and divide by root 2 plus 1. So that gives me, therefore, you may take this here, this side, sin theta into root 2 plus 1 is equal to cos theta
and in the bracket a square minus b square, root 2 square minus 1 square. Is that okay for you? A minus b into a plus b, a square minus b square. I've used two brackets. This cos theta as it is. Distribute करो. So root 2 sin theta. आप देख सकते हैं ये मिल गया root 2 sin theta और plus sin theta is equal to cos theta into square root gone 2. Square of 1 is 1. 2 minus 1 is 1. Therefore, root 2 sin theta plus sin theta is equal to cos theta into 1. Therefore, root 2 sin theta is equal to cos theta. इसको वे बाजू ले जाओ minus sin theta. You got it? Cos theta minus sin theta is that. Use symmetry. i.e. जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं मैं. That is equal to, and what is on left hand side? We write on right hand side, root 2 sin theta. That is proved. Correct? This, you know, if x is equal to y, then you can say y is equal to x. और इस प्रॉपर्टी को सिमेट्री कहते हैं. It is one and the same. Alright? Fine. So cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. Proved. Is that clear to you? Sure, children? So let's move on to the next one. It is 31st one. Here also, one condition is given to you. If sec theta plus tan theta is equal to p, then find the value of p square minus 1 whole upon p square plus 1. And its value you have to show it is equal to sin theta. Alright? Okay. Once again, you have this condition which you are supposed to use. Solution. Sec theta plus tan theta is equal to p. This is 1. Given. This is given. Children, now you can look here. P का p square चाहिए. I want p square here. Correct? So if you want p square on right hand side, yeah, you can get. But left hand side also has to be square. So taking square on both sides. Therefore, square of left hand side is equal to square of right hand side. The left hand side is sec theta plus tan theta, and this one is p. Now be careful. I'm writing upon 1 as well. Children, p square minus 1 whole upon p square plus 1. याद करो, if x upon y is equal to a upon b, correct? Then you can say x minus y upon x plus y is equal to a minus b upon a plus b. Then this is dividendo and componendo. Dividendo and, so to use dividendo and componendo, we are giving that favorable condition by taking upon 1. So देख लीजिए right hand side, p square minus 1 upon p square plus 1 by dividendo and componendo. Children, हमारे पास componendo and dividendo है, लेकिन पहले माइनस किया, so dividendo and componendo. Yeah, same thing I have to do here. Sec theta plus tan theta whole square, denominator minus 1 upon sec theta plus tan theta whole square plus 1. तो हमारा राइट हैंड साइड तो मिल, मतलब ये p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 वो मिल गया है. दैट इज अचीव. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन शुड गिव अस sin theta. Okay, let's see if we are getting it. Therefore, this is expand करो, sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta minus 1 whole upon, same way, sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta plus 1. That is equal to p square minus 1 upon p square plus 1.
यहां कुछ भी नहीं करना है क्योंकि we have achieved this. All right. Now आइडेंटिटी है, देखो 1 plus 10 square, 1 plus 10 square is sec square. 1 plus 10 square is sec square. Here sec square minus 1, हमारी आइडेंटिटी कौन सी है देख लो, 1 plus 10 square alpha is equal to sec square alpha. So यहां 1 plus 10 square है सीधा, so उसकी जगह पे हम sec square लिख सकते हैं, और यहां sec square minus 1 है, देखो ये 1 ये बाजू जाएगा, sec square कहां है, sec square minus 1, sec square minus 1 will give you 10 square. So okay, therefore this sec square minus 10, sec square minus 1 is 10 square theta. बाकी के दो टर्म as it is, ये भी 10 square theta मैं लिख देता हूं, और प्लस 2 into sec theta into 10 theta. That's it. और यहां ये 1 plus 10 square, this is sec square theta plus this term 2 sec theta into 10 theta, और इसकी जगह पे sec square theta. That is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Because 1 plus 10 square alpha is equal to sec square alpha. ठीक है, वो रीजन लिख दिया. Two places we use that. Okay. Now I'll erase this part. Let's see if we can manage this part here. All right. चलिए 10 square plus 10 square. Therefore चलेगा, ये इंडिकेटर होना चाहिए. Many children do not have habit of writing this indicators. जब बीच में इक्वल टू चलता है तो आगे therefore चलता है. So therefore 10 square plus 10 square is 2 10 square theta plus 2 sec theta into 10 theta whole upon sec square plus sec square is 2 sec square theta plus 2 sec theta into 10 theta, that is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. ओके, अब फैक्टराइजेशन, ये दो टर्म है, 2 कॉमन है और 10 कॉमन है, therefore 2 10 theta is common, 1 10 is left, so you can say 10 theta plus sec theta is left, so sec theta whole upon, here 2 is common and sec is common, so 2 sec theta is common, so sec is left plus 10 is left, that is equal to p square minus 1 whole upon p square plus 1. What next? अरे हो गया काम, 2 cancels, sec plus 10, 10 plus sec, it's one and the same, 10 plus sec, sec plus 10. Now therefore हमें तो sin theta चाहिए, so transform 10 theta as sin theta upon cos theta whole upon, so put division sign, sec theta is 1 upon cos theta, that is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. Therefore sin theta upon cos theta multiplied by cos theta upon 1 is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. This cancels, so you got it children, i.e. p square minus 1 upon p square plus 1 is equal to sin theta, and that is proved. Okay, let's see the alternative method now. Okay, this is given, so I'm calling it 1 and given, and now I pick up left hand side. What you observe, it's a rational expression in which only p is involved, and we have the value of p. P is equal to sec theta plus 10 theta. So I can substitute the value of p, and we will be in the similar situation as before. Left hand side, p square minus 1 upon p square plus 1. There we use the laws of proportion, dividendo and componendo. Here you don't need. Say this now. What is p? Sec plus 10. So sec theta plus 10 theta whole square, p square minus 1 upon, what is this? Sec theta plus 10 theta whole square and plus 1.
Now we are in similar situation as before. First term square, sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta minus 1 whole upon sec square theta plus 2 into sec theta into tan theta plus tan square theta plus 1. Alright? Okay? If you want, at both places you can put the value of 1. उधर कुछ differently किया था. यहाँ let's see. This is equal to sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta minus, be careful, sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta plus, reason, because 1 plus tan square alpha is equal to sec square alpha. मुझे चाहिए 1 की वैल्यू. आई वॉन्ट 1 इन बोथ प्लेसेस, माइनस और ब्रैकेट में 1, यहां नीचे प्लस और ब्रैकेट में 1. व्हाट इज 1? sec square minus tan square. So sec square theta minus tan square theta. यहां भी 1 की जगह पे sec square theta minus tan square theta. लेकिन एक और स्टेप करना पड़ेगा. ऑलराइट, चलिए करते हैं. sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta, और ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, ओपनिंग द ब्रैकेट, माइनस sec square theta, और वो बन गया प्लस tan square theta होल अपॉन sec square theta plus 2 sec theta into tan theta plus tan square theta plus, so no change in sign, plus sec square theta minus tan square theta. Now क्या कैंसल हो रहा है? माइनस sec square प्लस sec square, यहां माइनस tan square प्लस tan square. So you are left with tan square plus tan square, that is 2 tan square theta plus, this 2 sec theta into tan theta whole upon, here you are left with sec square plus sec square, that is 2 sec square theta plus this term 2 sec theta into tan theta. Alright, 2 is common and tan theta is common. So in the bracket 1 tan theta is left and here sec theta is left. Whole upon 2 is common and sec theta is common. So 2 sec theta into, so sec theta is left plus tan theta is left. Now this is tan theta plus sec theta plus tan theta, it's one and the same. 2 also cancel. What is tan theta? Sin theta upon cos theta whole upon, so divide by, what is sec theta? 1 upon cos theta. Correct? Now this is sin upon cos multiplied by cos upon what? Cos cancels, and that is equal to sin theta, that is equal to RHS, and that is proved. So that is the alternative method. Alright, we'll see more of this kind of sums in the next session, but for today it's enough. Bye bye.